Namaskar. Good evening, viewers. You're watching Sansad TV, and this is House Highlights with me, Rajiv Kumar Singh, where we get you the details of the proceedings of the day in both Lok Sabha and Rajya Sabha. Before we bring you the details, a look at the headlines. Lok Sabha passes National Anti-Doping Bill 2021. Bill aims to provide for constitution of a National Anti-Doping Agency and National Dope Testing Laboratory to regulate anti-doping activities in sports. Rajya Sabha adopts motion to suspend Aam Aadmi Party member Sanjay Singh till Friday, citing unruly behavior in the House. Rajya Sabha proceedings adjourned for the day amid opposition uproar over suspension of MPs and other issues. Proceedings disrupted in the Lok Sabha as well. Opposition parties protests over issues of price rise and GST rate hike. News now in detail. The National Anti-Doping Bill 2021 was passed in Lok Sabha on Wednesday. The bill aims to provide for the constitution of the National Anti-Doping Agency and the National Dope Testing Laboratory for regulating anti-doping activities in sports. The bill, moved by Union Minister Anurag Thakur, seeks to strengthen measures to check drug abuse by sportspersons. The minister said the bill will give effect to a UN Convention on Anti-Doping. The bill was introduced in Lok Sabha in December last year and had undergone the scrutiny of a parliamentary committee. NADA and the NDTL, Disciplinary and the Educating Panel, सर इसके लिए रूल्स बनाते समय हम सारे सुझावों को उसमें प्रयास करेंगे कि उनको वहाँ पर ध्यान रखा जाए। एक और माननीय सांसद ने कहा था कि इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार ही इसको किया जाए, तो मैं कहना चाहता हूँ हमने इसका स्ट्रक्चर हो या कानूनी प्रावधान जो किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी वाडा, यूनेस्को के प्रावधान, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और दुनिया भर के देशों के जो कानून अब तक बने हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इसको तैयार किया गया है। कई बार ऐसा होता था कि हम सिर्फ सजा देने के लिए, रोकने के लिए नहीं, कई लोगों को गलत भी फंसा दिया जाता था और खिलाड़ियों को अपनी बात कहने का मौका भी नहीं मिलता था। अभी इस कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी एथलीट को अपनी अगर गलत ढंग से उसको फंसाया गया है तो उसको भी अपने अपील बोर्ड में जाने का अधिकार होगा, उसको सुना जाएगा। Creates an unreasonable, arbitrary authority in the hands of agency members to undertake to enter athletes' premises, seize any equipment, device, or substance. The bill does not provide any clarity on the protection of the data they procured from the testing or investigating the athletes. These are missing in this bill. इस विधेयक के कानून बनते ही नाडा की शक्तियां बढ़ जाएगी और साथ ही खिलाड़ियों को भी डोपिंग के खिलाफ अधिकार मिल जाएंगे। कानून बनने के बाद डोप पॉजिटिव खिलाड़ियों को नाडा में होने वाली सुनवाई भी इसके दायरे में रहेगी। नाडा सुनवाई पैनल फैसलों को इसके बाद अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। देश में डोपिंग के खिलाफ कानून बनाने की दिशा में यह एक अच्छा प्रयास है। There will be disciplinary committee. Now, disciplinary committee will have how many members? हो गया तो बस अब क्या, बहुत ज़्यादा मेंबर है डिसिप्लिनरी कमेटी में। आप भी तो नहीं चाहेंगे कि कुछ लोग आके कमेटी में बैठ के पैसा ले जाए। इतना बड़ा बड़ा कमेटी बनाने का क्या जरूरत है? To the suggestion to ensure that fundamental rights to privacy of athletics is not compromised, as there are so many cases when innocent athletics are subjected to media trial. I also request the government to make it mandatory for every sports camp to have at least one certified sports medicine doctor to advise our athletics.
हर एक राज्य में टेस्टिंग लैबोरेटरीज को शुरू करना चाहिए। महोदया, मैं आपके माध्यम से संबंधित खेल मंत्री जी को आग्रह करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि महाराष्ट्र राज्य में मुंबई में एक प्रयोगशाला शुरू की जाए, जिससे देश की जरूरतों पूरी हो जाएगी। इसके अलावा एंटी डोपिंग विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भारत दक्षिण पूर्वी एशिया का एक अग्रगणी देश बनेगा। The National Board for Anti-Doping Sports will form a disciplinary panel under the bill to determine the results of anti-doping rule infractions. The board will also form an appeal panel to hear appeals against disciplinary panel decisions. The board has the authority to remove members of the disciplinary panel and appeal panels for reasons outlined the regulations adopting by it. These grounds for removal are not mentioned in the bills. Because education should be on merit, sports should be also on merit. And this entire organization of sports must be autonomous. And I hope that this government will make sure that this entire committee that they have come up with a lot of recommendations as the selection mechanism of the national board would be completely autonomous. And I hope the Honorable Minister in his reply would tell us what would be the selection process and who would be the right person for the job. भारत के जो नौजवान हैं वो प्रेरित होते हैं, वो इंस्पायर होते हैं, उनको आइकॉन्स चाहिए, उन्हें पॉजिटिव आइकॉन्स चाहिए। और जब खेल के अंदर डोपिंग आती है तो पॉजिटिव आइकॉन्स पे एक झटका लगता है। चीटिंग जब होती है तो लोगों को लगता है कि क्या चीटिंग करके आगे बढ़ना एक सही तरीका है। तो इसे रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। कोच को भी पकड़ना होगा, जो कोच है उसको पकड़ना होगा आपको। अब बच्चा को जेल में दे देते, स्पोर्ट्स को भी करना होगा, आपको कोच भी करना होगा, मैनेजर भी करने होगा। मजाक हो रहा आप लोग, वो क्या देख रहा बच्चे लोग को सपोर्ट करे, इतना छोटा छोटा बच्चे लोग। आई थिंक वो भी चढ़ना चाहिए आप लोग को। एक कोच बोलेगा हम कुछ जानते नहीं, ये बच्चा खा लिया, नहीं, यू शुड बी सपोर्ट फ्रॉम बिहाइंड। We have seen in 2019 there were over 4,000 samples that have been collected, sir. But in 2020, just before a year before we are supposed to go to Olympic Games, there were only 1,186 samples that have been collected, sir. Maybe it's because of COVID and other reasons, but still, I think, as other members have mentioned, that we need to increase the number of testing centers so that this anti-doping, this doping incidents that doesn't happen, sir. जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी भी है वो भी यही सजेस्ट करता है कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसको चलना चाहिए। उसमें मिनिमम गवर्नेंस इंटरफेरेंस होना चाहिए ताकि वो अपने काम सही तरीके से बिना कोई इन्फ्लुएंस के साथ वो करे। और वाडा को क्यों इम्पोर्टेंट हम लेना चाहिए, क्योंकि एक देश ने इसी तरह वाडा के जो सजेशंस थे उसको नकारा तो उनको पूरे ओलंपिक से ही बैन हो गए वो रशिया। तो इसलिए हमें वाडा को बिल्कुल ध्यान में रख के कोई भी अगर निर्णय हम लेंगे तो ज़रूर उनके जो सजेशन है, उनके जो राय है, हमें ज़रूर पॉजिटिवली लेना चाहिए। जितने भी प्लेयर्स ग्राउंड में आएंगे, जो भी गेम्स खेलने आएंगे, वो सभी प्लेयर्स का, जैसे राम जी ने कहा कि भाई बाहर से इंटरनेशनली अगर कोई खिलाड़ी आता है वो भी हमारे नॉर्म्स को या बिल को फॉलो करेंगे या उनके कंट्री के अकॉर्डिंगली ये बिल को फॉलो किया जाएगा। बस इतना क्लियरेंस अगर हमारे मंत्री महोदय ने दिया। डोपिंग is different from taking alcohol. One of our friends from the other side said, and I entirely agree, it's different from taking drugs. Doping refers to the use of substance or technique to illegally improve athletic performance. कि कौन सा इंग्रेडिएंट जो सप्लीमेंट भी बोले वो सर्टिफाइड होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, उसमें कौन सी इंग्रेडिएंट्स ऐसी होती हैं जो उनके लिए बहुत गलत साबित हो सकती है आगे चल के। और सर ये सिर्फ कॉम्पिटिशन्स के वक्त ही नहीं, इसको इनिशियल स्टेज में भी लागू करना चाहिए। ये जो सब्सटेंसेस को चेक करना, उनको शिक्षा देना, और ख़ास करके सर युवाओं में एक चीज़ होती है, जैसे सर टबैको हो या अल्कोहल हो या ड्रग्स हो, बहुत आसानी से सर मिल जाता है। युवाओं में एक अलग किस्म की एक अट्रैक्शन होती है। आप कोई चीज़ उनको मना करेंगे ना कि नहीं बेटा या बेटी इस चीज़ को नहीं करना है, तो उनके मन में एक चीज़ खलती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि क्यों मना किया जा रहा है। So we have to very specially treat them, educate them how to avoid and how to stay away from all these things.
आप इसमें अगर लायबिलिटी जब टेस्ट होगा तो उसमें उन खिलाड़ियों के साथ उनके कोचिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए, पहले से तय होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए केवल खिलाड़ी तो दोषी पाया गया लेकिन जो उसको गाइड कर रहा था वो मतलब उसमें निकल जाए। वर्तमान हमारे देश में केवल राष्ट्रीय डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, मैं अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मैं दरख्वास्त करूंगा मंत्री महोदय से कि डोपिंग टेस्ट के लिए अधिक राष्ट्रीय डोपिंग लेबोरेटरी स्थापित करें, बिकॉज वी हैव वेरी लेस एंड फ्यू। मुझे विश्वास है कि हमारे आदरणीय लोकप्रियता बर्खास्ता प्राप्त हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में नाडा के इस बिल माध्यम से यथापेक्षित सुधार लाने में सफल होगी। Discussion on matters of urgent public importance under Rule 377 were taken by the lower house. Trinamool Congress MP Saugata Roy urged the government to immediately withdraw Agnipath scheme in the interest of the country, citing the protests by youth and security concerns expressed by experts. Meanwhile, BJP MP from Daman and Diu, Lalubhai Patel, raised the issue of fishermen languishing in Pakistani jails. He said 618 fishermen were in Pakistani jails, with 166 of them having completed their sentences. He said 1,513 fishing boats are also in the custody of neighboring countries. Patel urged Minister of External Affairs S. Jaishankar to make further efforts to ensure the repatriation of the fishermen. Sir, soldiers should be recruited for 4 years only under the Agnipath scheme with no retirement benefits like pension and medical insurance. After 4 years, only 25% of recruits would be absorbed as regulars for 15 years, while the remaining 75% will be relieved. Sir, youth feel that the government policy on recruitment to the armed forces is playing with their career. Youth are questioning as to what will happen to their career after 4 years. काफ़ी समय से हमारे दीव और गुजरात के हमारे मछुआरों जो पाकिस्तान की जेल में कैद है उनको छुड़ाने की कोई कार्यवाही हुई है। एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि उनके जेलों में करीब 618 मछुआरों अभी भी कैद में हैं, जिसमें 167 ऐसे हैं जिनकी सज़ा 2018 में ख़त्म हो गई फिर भी छुड़ा नहीं गया। इसके साथ करीब 1513 बोट भी अभी उसके कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में। अध्यक्ष जी, 4 सालों भी ज़्यादा हो गया, पाकिस्तान ने किसी भी मछुआरों को छोड़ा नहीं। बोट की तो बात दूर और छोड़ते नहीं। आपके माध्यम से मैं माननीय विदेश मंत्री को निवेदन करता हूं कि मछुआरों को पकड़े जाने से उनके परिवार में दहशत रहते कि यह मछुआरों की पाकिस्तान की जेल में क्या हालत है, तो पाकिस्तान से बातचीत करके उन्होंने छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू करे और जल्द में जल्द छुड़े लावे। Lok Sabha proceedings were disrupted on Wednesday following opposition protests over price rise and GST rate hike. The protests forced Speaker Om Birla to adjourn the House after just 20 minutes of business. As soon as the House met at 11 a.m., the Speaker welcomed a parliamentary delegation from Mozambique, which is here to witness the proceedings. माननीय सदस्यगण, मोजाम्बिक गणराज्य की असेंबली की अध्यक्ष महामहिमा एस्पेरांसा बियास के नेतृत्व में मोजाम्बिक के संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यगण हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर आए हैं और अभी सदन की विशेष बॉक्स में बैठे हैं। मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से माननीय सदस्यों की ओर से शिष्टमंडल में विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वे मंगलवार 26 जुलाई 2022 को भारत पहुंचे हैं। दिल्ली में अपने संक्षिप्त प्रवास में वे आगरा भ्रमण भी करेंगे और शनिवार 30 जुलाई 2022 को भारत से प्रस्थान करेंगे। हम भारत में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं।
उनके माध्यम से हम मोजाम्बिक गणराज्य की असेंबली, वहाँ की सरकार, वहाँ की जनता को मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। As Speaker Birla concluded his speech highlighting India-Mozambique cordial relations and started the question hour, opposition members began protests in the House demanding the revocation of the order suspending 4 MPs. The Speaker tried to run the House despite the protests and allowed Railway Minister Ashwini Vaishnav and Coal Minister Prahlad Joshi to reply to supplementaries related to their respective ministries. When the protests grew louder, the Speaker appealed to the opposition members to go back to their seats, saying House rules and regulations were framed by the MPs themselves and they should not violate it. Prahlad Joshi, who is also the Parliamentary Affairs Minister, said Finance Minister Nirmala Sitharaman has returned after recovering from a recent bout of illness and the government was ready for a debate on price rise on Wednesday itself. But as protests continued, the Speaker adjourned the House till 12 noon. Similar scenes were witnessed at noon and BJP MP Kirit Solanki, who was in the chair, adjourned the proceedings till 2 p.m. मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। ये सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है और आपके द्वारा बनाए गए नियम प्रक्रियाओं के अंदर जो आपने बनाया है, सदन ने बनाया है, 349 के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी सदस्य माननीय बेल में आकर नारेबाजी और तख्तियां लेकर नहीं आए। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि नियम प्रक्रियाओं की पालन करें, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आए। ये सदन आपका है। अगर संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो आप चर्चा करें, संवाद करें, बातचीत करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सरकार से आप सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन आप नारेबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से अशोभनीय व्यवहार कर रहे हैं, ये भारत के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। जिस प्राइस राइज के बारे में वो बात करना चाहता है, माननीय वित्त मंत्री जी आज पहुंच चुके हैं। शी हैज रीच्ड द पार्लियामेंट आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द कोविड। अगर आप आज निर्णय लेते हैं तो आज भी हम प्राइस राइज पर चर्चा करने के लिए तैयार है सर। ये लोग जिन अपोजिशन के यूपीए के और कई अपोजिशन पार्टी जहां रूलिंग में है स्टेट में, वो उनका जो फ्यूल का टैक्स वगैरह नहीं घटा है, इसके कारण वो चर्चा से भागना चाहते हैं। हम वित्त मंत्री हम सबके शुभकामनाओं के साथ और भगवान के आशीर्वाद के साथ पूरा स्वस्थ होकर पार्लियामेंट पहुंचे हुए हैं। हम चर्चा करने के लिए आज अगर आप निर्णय कर तो अभी हम तैयार हैं। कृपया सदन चलाने के लिए मौका दे, मैं इतना ही प्रार्थना करता हूं सर। We will take a short break here and be right back with more session updates. ओलंपिक्स में मिले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। देखना ना भूलिए, भारत एक सोच मेरे साथ। Welcome back. This is House Highlights. News now from the upper house of the Parliament. Rajya Sabha proceedings were adjourned for the day amid opposition uproar over suspension of MPs and other issues on Wednesday. As soon as the proceedings commenced at 2 p.m., opposition members, mostly from AAP, trooped to the well of the House. Bhubaneswar Kalita, who was in the chair, asked a suspended AAP member Sanjay Singh to exit the House. The opposition members, however, kept on raising slogans, with protesting MPs refusing to budge. Kalita adjourned the proceedings for the day.
Rajya Sabha proceedings were adjourned thrice during the pre-lunch period amid uproar by the opposition members, and Singh was suspended for the remainder of the week. The upper house was adjourned soon after it met at 11 a.m. and then twice during the question hour, first for 15 minutes and then till 2 p.m. The Rajya Sabha adopted a motion to suspend Aam Aadmi Party member Sanjay Singh for the remaining part of the week for his unruly behavior in the House. The suspension comes a day after 19 MPs of opposition parties, including 7 from the TMC, 6 from the DMK, besides those from TRS, CPIM and CPI, were suspended for their unruly behavior in the House. Soon after the House met for question hour at 12 noon, Deputy Chairman Harivansh invoked Rule 256 and named Singh for tearing papers and throwing it at the chair on Tuesday. The Deputy Chairman said Singh's actions was in utter disregard of the rules and the authority of the chair. Soon thereafter, Minister of State for Parliamentary Affairs V. Muralidharan moved a motion to suspend Singh from the House for the remainder of the week. The motion was adopted by voice vote, even as opposition members continue to raise uproar in the well of the House. Sanjay Singh be suspended from the services of the House for the remaining part of the current week for his unruly behavior, unbecoming of a member of Rajya Sabha yesterday, the 26th July 2022, by shouting slogans from the well of the House, tearing some papers and throwing them towards the chair, thereby disregarding the authority of the chair and bringing disrepute to this august House. 256 के तहत माननीय संजय जी आपका निलंबन हुआ है। आपसे आप वरिष्ठ सदस्य आग्रह है कि आप सदन को चलने दें और बाहर जाएं। आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। This is all we have in today's bulletin. For daily updates of the Parliament news, keep watching Sansad TV. Good night.